Hello everyone. My name is Akshay and this is day 68 of our GFG POTD streak. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है यार. आज का क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी का है बट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज का. गिवन अ बाइनरी ट्री द टास्क इज टू फाइंड द सब ट्री विद द मैक्सिमम सम इन द ट्री एंड रिटर्न इट्स सम. ओके, हमें एक ऐसा सब ट्री निकालना है जिस सब ट्री का सम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए विद इन दैट ट्री. ओके, सो इनपुट देख लेते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन इज रिटन एज all the tree elements are positive since the largest sum is equal to the sum of all tree elements. ठीक है, बट ये तो केस हो गया कि all the tree elements are positive, so we will not check कि हमारा ट्री पॉजिटिव है या नहीं, है ना. हम तो भाई डायरेक्ट ट्रैवर्सल लगाएंगे इसमें फॉर ईच एंड एवरी सब ट्री. और मैं इसमें क्या देख पा रहा हूँ यार, मैं इसको ले चलता हूँ पहले पेंट पे. ओके, तो लेट्स से सपोज हम इसमें सबसे पहले छोटे पार्ट के लिए देखते हैं. सपोज वी हैव दिस 2 4 5, है ना. और हमें क्या करना है कि when I am at this root I need to compute the left subtree sum and the right subtree sum, right? And when I'm at this root I will say that मेरे को left और right का sum पता है, left और right plus root से sum करके I can get the sum, right? तो इसका क्या मतलब है यार कि I am just using a traversal. I'm just using a traversal. Either you go left, right or root, or you go right, left or root. That's the case. But since left, right or root एक conventional thing है, which is also known as post order traversal, so we will do this thing. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो मतलब मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन इंटायरली चेंज होके पोस्ट ऑर्डर पे आ चुका है. तो हम इस पे पोस्ट ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि whenever we will encounter a root of any subtree, we will do the manipulation or calculation of maintaining the max answer. तो देखते हैं. तो ओके, तो अगर मैं रिकर्जन ट्री बनाऊँ तो वो किस तरह दिखेगा यार. सबसे पहले हम 1 पे होंगे, फिर हम लेफ्ट में जाएंगे उसके, दैट इज 2 पे जाएंगे, देन 2 के हम लेफ्ट में जाएंगे, दैट इज 4 पे, एंड देन 4 के लेफ्ट पे जाएंगे, देन वी विल गो टू नल. तो अगर नल है तो यार हमें उस केस में तो रिटर्न 0 करना होगा. तो मैं यहाँ पे एक बेस केस यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ लेट्स से रूट इज इक्वल्स टू नल, देन व्हाट, रिटर्न 0. ठीक है, फिर मैं लेफ्ट पे गया था, राइट. तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकर लेफ्ट एंड देन आई विल रिकर राइट. तो मैं सूडो कोड भी साथ साथ लिखते जा रहा हूँ. फिर मैं देखा नल है तो 0 हो गया, देन 4 के राइट पे गए एंड दैट गिव्स अस अगेन नल, सो विल रिटर्न 0. एंड एट दिस पोजीशन आई विल कैलकुलेट द मैक्स. आई एम at this sub tree which has root as 4 and both null as left and right. So I will here calculate as my, instead of printing the root dot data in the post order traversal, what I will do, I will make one some answer and I will do max of what, answer comma root dot data, and let's say I have stored in this thing, let's say I have stored in integer L1 and this one as R1. So what I can do, root dot data plus L1 plus R1, I can do this thing, है ना. ओके, तो आई कैन सी कि यहाँ पे हमारा जो मैक्स है वो अपडेट हो जाएगा. लेट्स से हम मैक्स निकाल रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी इनिशियली रखते हैं, इट विल अपडेटेड टू 4, राइट. ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, 2 के बाद we have calculated the left children will go to right, so it will come to 5, then it will point to null which will return 0, it will again point to the right children, it will return 0, and at the last the max will again be compared for this root node where the subtree is, मैं subtree बना देता, right, where the subtree is this one, and here the subtree was 4 and so here it will be compared with previously क्या था आंसर 4, तो 4,5 से कंपेयर होगा and the max will be updated to 5, right. तो अब ट्री को कंप्लीट करते हुए चलते हैं. सो द लेफ्ट सब ट्री इज नाउ कैलकुलेटेड. तो 2 का हमने 4 विजिट कर लिया एंड 5 विजिट किया. नाउ वी हैव टू प्रोसेस दिस रूट नोड ऑफ 2, राइट. तो अब यहाँ पे मैक्स का अपडेशन होगा. सो मैक्स विल बी अपडेटेड नाउ हियर. सो प्रीवियसली इट वाज 5, राइट, सो इट विल बी कंपेयर्ड विद 5 एंड एंड ऑल्सो हमें हमें यहाँ से इस सब ट्री का हमें पूरा सम चाहिए, राइट. हमें यहाँ से भी कुछ रिटर्न कराना होगा. तो इसका मतलब यहाँ से रिटर्न होना क्या चाहिए, यहाँ से रिटर्न होना चाहिए इस सब ट्री का सम, द होल सम, राइट. तो आई कैन सी द सम इज 4 एंड आई कैन सी द सम इज 5, बट व्हाट आई हैव टू राइट, मतलब सब कुछ मैक्स प्रोसेस होने के बाद मेरे को रिटर्न भी तो कराना होगा. सो आई हैव टू राइट दैट रिटर्न रूट डॉट डेटा प्लस, मैंने लेफ्ट आंसर को L1 में स्टोर किया था, प्लस L1 प्लस R1. हाँ, देन यू कैन सी अगर मैंने ये लाइन लिख दी तो फिर यहाँ से ये 5 रिटर्न कर देगा ये कॉल एंड दिस विल रिटर्न 4, राइट. एंड विच आई विल यूज दिस टू थिंग्स
to compare the max at this point. So it will be now max of 2 plus 4 plus 5. So it will be 11. So max is now updated to 11. Nice. ठीक है, तो अब हमारा यार ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है. कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट इंटायरली कंप्लीट हो चुका है, राइट. वी विल नाउ मूव टू द राइट चिल्ड्रन ऑफ 3. ठीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ. वी विल नाउ मूव टू द राइट चिल्ड्रन ऑफ 1. So it will again point to left 6, and it will again point to null. It will again point to right node children of null. It will return 0, return 0. So max here again will be compared. It will be compared with 11,6, है ना, and still the max will remain 11. मैं ड्राइन आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि यार कोड लिखना समझना. देख रहे हो ना, मैं सूडो कोड नहीं लिख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा हूँ. तो मैं कुछ नहीं यार, मैं आपको पोस्ट ऑर्डर ही समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में. तो ठीक है, विल डू दी नेक्स्ट ट्रैवर्सल. तो 6 हो गया हमारा. 3 के लिए we will process the right child, that is 7. It will again go to null, again go to null, right. And as soon as the call is over, it will return the sum of the subtree. That will, it will return 7 and it will return 6, right. तो अब हम यहाँ पे फिर से कंपेयर करेंगे एट दिस पॉइंट. यहाँ पे भी एक कंपैरिजन हुई होगी. यहाँ पे 11,7 से कंपेयर किया गया होगा, बट अगेन द आंसर रिमेन 11. Now at this point it will be compared. So it will be compared with max of 11 comma root dot data, that is 3, plus L1 and R1. This is the L1, this is the R1. It will be compared with 3 plus 6 plus 7. So it is updated to 16 now. The max is updated to 16. Okay, so here the value will be returned the root. हमें वैल्यू भी रिटर्न करना था, राइट. सो इट विल बी रिटर्न what, 3 plus 6 plus 7, so it will be returned 16 here, right. And here it will be returned root was 2, the L1 and R1 was 4 and 5, so it will be returned 11 here. The last comparison of max will be done at this level. So I can write, let me use some different color. Let's max of, as of now the max was 11, right. So I will compare it with 11. No, as of now the max was 16, right. Let me check. So here it was 16, right. So it will be updated to 16. Okay, I added a mistake in, okay, 16 comma 7, so it will be 16. Okay, so as of now the max is 16 as of now, or I should just cut it and write it again. Okay, so it will be compared with root dot data, that is 1. The L1 is now pointing to 11, R1 is now pointing to 16. If I compare it, it will be 11 comma 28, and the maximum value will be 28. As you can see, the maximum is coming 28. Since we are not checking कि कौन से पॉजिटिव है, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, सो दिस कोड विल वर्क फॉर एवरी ट्री. इधर इट हैज ऑल द पॉजिटिव एलिमेंट्स और द नेगेटिव एलिमेंट्स. ठीक है, तो मैंने आपको टेस्ट एक केस के लिए मैंने आपको पूरा ड्राइविंग करके दिखा दिया है. आप चाहो तो आप सेकंड टेस्ट केस के लिए ड्राइविंग कर लेना, है ना. नाउ वी विल मूव टू द कोड. बिफोर मूविंग टू द कोड, लेट्स डिसाइड द स्टेप्स. मैंने सारे स्टेप्स इसी सूडो कोड से ही, मतलब ड्राइविंग करते ही लिखा है यार, बट फिर भी एक बार वॉक थ्रू देख लेते हैं. So the first step will be is root is equals to null, then we have to return 0. ये मैंने कैसे लिखा? At this point से. Let me use some different color. From this point I have written, right? This point. तो okay, so this is the step 1. Step 2, हमें कुछ नहीं है, recur left और recur right करना था, similar as the post order traversal. And in the post order we just print the data, but instead of that we have to use that data plus the L1 and R1 data and have to compare it with a variable we have name as max answer, and we have to make the max of it. And at the last we have to return the root dot data plus L1 plus R1 because it has to be compared, right. Suppose I'm at this point, this root node 1. अगर मुझे ये वैल्यूज नहीं मिलेंगे, अगर ये 11 and 16 रिटर्न ही नहीं होंगे, तो फिर मैं कंपेयर कैसे करूंगा? हाउ वुड आई कंपेयर इट, राइट. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन at every point it will return after a call is over, left and right, it should return this value. I hope this point is very clear to you क्योंकि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट किया. तो ओके, लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट. तो वी नीड अ फंक्शन पोस्ट ऑर्डर, राइट. So let's make it static int post order. What will we pass? Just a root node. What were the steps? Step 1 was whenever I will, okay, as soon as I encounter what root is null, then what I have to do? I have to return 0. Then I have to recur for left and recur for right, as well as I have to store that answer too, right. So I will do int L1
L1 is nothing, just the value of left subtree. So I will write recur for root dot left. Similarly, int r1, okay, po, recur for root dot right. Right, you're just doing the post order traversal. That's why I'm not mentioning any comments. Now what I have to do, I have to store it in an answer. Let's say answer is math dot max answer, comma, what I have to do, root dot data plus plus L1 plus R1, right? And at the last we have to return this value as well, that this one. I hope we are good to go. And since we are using this answer, I have to make this answer as a global variable. So static int में सब जगह लिखा है, so we have to write as static, because if you don't write it static, then it will get that you cannot reference a static function to the another non-static variable or function. So let's make an answer, and I have to initialize it here. So answer is equals to integer dot min value. Why I'm using min value? Because I'm comparing with the maximum, right? You want to find max, you have to compare it with min, and the vice versa. So that's it, and just call this function post order root and what, return answer. I hope this will I think this will do our case. And ये post order है तो ये OFN से ज़्यादा तो जाएगा नहीं. We'll talk about that. So let's see the input. Okay, your output expected output matches. Let's just hit the submit button. It will get submitted because I have read the constraint. It's less than 10 power 8, and okay, so fantastic, it gets submitted. So let's discuss the constraint part also. So it's less than 10 power 5, right? So the maximum complexity here we could have using the 10 power 5 है, तो maximum complexity we could have using is n log n. वो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो बनाई है, मैंने सबको समझाया, ये भी वीडियो पर आ रही होगी, यू कैन वॉच दैट थिंग. एंड यू कैन यूज log n, वी कैन यूज n, वी कैन यूज रूट n, मतलब इसके नीचे चले जाओ, द वर्स्ट विल बी n log n. इसके ऊपर मत जाना, नहीं तो यू विल गेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n स्क्वायर नहीं यूज कर सकते, लाइक TLE. तो ठीक है, सो आर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल takes time complexity as O of n, and क्योंकि recursive stack भी यूज होता है, so that also comes into the part of space complexity. So the space complexity will be O of n. So that's it for the question. अच्छा, क्वेश्चन तो काफी आसान था यार, मतलब पता नहीं इन्होंने हार्ड कैटेगरी में क्यों दे रखा है. मे बी ये न्यू ईयर वीकेंड है तो शायद कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर रहे हो, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू पॉइंट्स. मे बी द केस, आई डोंट नो. तो ठीक है, मिलते हैं कल के प्यूट स्ट्रीट के डे 69 में. And few last things, that this is my DSA repository. You can start and fork to get help with the source code, and that's my Instagram channel. I post the regular updates of which video is coming which when, and everything about the updates regarding my channel. And thank you यार, हमारी फैमिली अब 480 क्रॉस हो चुकी है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि इस न्यू ईयर से पहले we will touch 500, and we'll do a small celebration about that. I'll post that thing in the community. तो ठीक है, लगे रहो तब तक के लिए. बाय बाय, टेक केयर, और बस पढ़ते रहो यार, दैट्स द मेन थिंग. ओके, चलो बाय बाय.